तो आज जो है हम लोग पढ़ाई करेंगे। क्या करेंगे पता है? पढ़ाई करेंगे ना। डेली तो पढ़ाई ही करते। चलिए, इन लास्ट क्लास आप लोगों ने देखा था, हम लोगों ने डिस्कशन किया था about the fate of pyruvic acid when it enters into mitochondria, when it takes part in aerobic respiration। तो आपने देखा था कि क्रेब्स साइकिल में क्या होता है। तो क्रेब्स साइकिल में देखा था हमने, पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में गया तो उसका डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, डिहाइड्रोजनेशन हुआ एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए बना था। दिस रिएक्शन इज लिंक रिएक्शन बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। एसिटाइल कोएंजाइम ए enters into Krebs cycle and it passes through the different steps and there is complete decarboxylation। and during Krebs cycle हम लोगों ने देखा था कि 3 स्टेप्स में NADH बना था और एक स्टेप ऐसा था जहां पर FADH2 बना था। एक जगह सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन हुआ था। तो इन्हें नटसेल यदि हम देखें तो इन्हें नटसेल ग्लाइकोलाइसिस में हमने देखा, ग्लाइकोलाइसिस में नेट गेन हुआ था 2 ATP का और 2 NADH बना था, NADH ग्लाइकोलाइसिस में बना था। लिंक रिएक्शन की यदि बात करें तो लिंक रिएक्शन के दौरान हम लोगों ने देखा था कि 2 NADH बना था। ग्लाइकोलाइसिस में 2 पायरुविक एसिड बनता है और पायरुविक एसिड से जब एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है तो NADH बनता है। देयर आर 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स, तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेंगे, राइट। तो 2 NADH बनेगा तो लिंक रिएक्शन में 2 NADH मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल में हमने देखा था, क्रेब्स साइकिल एक एसिटाइल कोएंजाइम ए से 3 NADH बना था तो 2 से कितना बनेगा 6, तो 6 NADH क्रेब्स साइकिल में बना एंड एक साइकिल में एक FADH2 बना था तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम से ए से 2 FADH2 बनेगा। तो FADH कितना हो गया, FADH2 हो गया कितना, 2 मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा क्रेब्स साइकिल में हम लोगों ने देखा था कि एक ATP बना था सबस्ट्रेट लेवल पर, तो 2 ATP हो गया, 2 मॉलिक्यूल्स एसिटाइल कोएंजाइम ए से, तो 2 ATP हो गया, राइट। एंड आई हैव टोल्ड यू दैट दिस NADH, एक NADH से 3 ATP बनते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 6
ये हो जाएगा आपको 18 एटीपी, और ये एक FeNH2 से 2 एटीपी बनता है, तो ये हो जाएगा आपको 4 एटीपी। तो यदि टोटल एटीपी हम काउंट करें तो टोटल एटीपी कितना हो गया? 2, 6, 8 और 6, 14 एटीपी हुआ। 14 and 18 32 हो गया, and 4 36 and 2. So total ATP molecules produced due to complete breakdown of a glucose molecule is 38. Sometimes it may be 36, that we have to tell you later on. अब हम यहां देखेंगे कि ये NADH से या FADH से एटीपी कैसे बनता है। अभी तो मैंने आपको कहा कि एक NADH से 3 एटीपी बनेगा और एक FADH से 2 एटीपी बनेगा। हाउ? एंड ड्यूरिंग द इंटायर प्रोसेस we have seen that there is no use of oxygen, but we know that during respiration oxygen is used. So what is the use of oxygen? Where oxygen is used? Okay? So ATP formation occurs. ATP formation occurs. And oxygen is used to form water. This process occurs at last, means there is terminal oxidation. So as for performing this process, to get energy from NADH and FADH, a system is present in the cells, in the inner membrane of mitochondria. That system is known as electron transport system. So today our main topic is to describe the electron transport system and oxygen dependent formation of ATP, that is oxidative phosphorylation. तो हम लोग आज देखेंगे ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो कहाँ होता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और ऑक्सीजन का यूज कहाँ होता है, एटीपी कैसे बनता है। तो वी हैव टू डिस्क्राइब अबाउट दीज थिंग्स टुडे। अब देखो बेटा, इन यूकैरियोटिक सेल, in eukaryotic cell mitochondria is present, but in prokaryotic cell there is no mitochondrium. Mitochondrium नहीं है, mitochondrium नहीं है प्रोकैरियोट्स में, आप जानते हैं यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS is present in the inner membrane of mitochondria. ध्यान में रखेंगे आप, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वह माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में है। हम लोगों ने पढ़ा है ना माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपने तो क्या देखा कि ये डबल मेम्ब्रेनस सिस्टम है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, पर है ना वो। तो इनर मेम्ब्रेन जो है, इस इनर मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इन प्रोकैरियोट्स देयर इज सिंगल मेम्ब्रेन, दैट इज सेल मेम्ब्रेन,
तो ईटीएस वहां पर होगा सेल मेम्ब्रेन में। I have told you already that mesosomes of prokaryote bacteria are involved in respiration. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है that is present in the inner membrane of mitochondria. अब पहले ये समझो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है क्या। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है it is a system that is formed by electron carriers. Electron carriers which are arranged in a specific way in the inner mitochondrial membrane through which electrons from NADH and FADH पास। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसमें ए सेट ऑफ कैरियर्स है। वो कैरियर्स क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे। सम अदर कंपोनेंट्स आर आल्सो प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसको हम कहते हैं मोबाइल कैरियर्स। So electron carriers as well as mobile carriers both are present in inner mitochondrial membrane in a specific way through which electrons are transported during oxidative phosphorylation. So transport of electron is the generation of ATP where oxygen is used. This process of ATP formation where oxygen is used is called oxidative phosphorylation. समझ गए? So oxidative phosphorylation is oxygen dependent formation of ATP. Clear? Oxygen dependent formation of ATP is called oxidative phosphorylation. Light dependent formation of ATP is called photophosphorylation. Substrate dependent phosphorylation formation of ATP is called substrate level phosphorylation. तो तीन तरह का phosphorylation होता है। We have studied about two types of phosphorylation, photophosphorylation and substrate level phosphorylation की बात हम पढ़ चुके हैं। Now the third type of phosphorylation that is dependent upon the electron transport system in which oxygen is used is called oxidative phosphorylation. अब देखते हैं कि ये जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है वो डिपेंड हुआ किस पर? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया का देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया है तो ये तो हो गया मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया और ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है? I have told you that electron transport system is present in inner membrane of mitochondria. तो हम inner membrane जो है उसकी बात करते हैं और देखते हैं कि इस inner membrane of mitochondria में electron transport system किस तरह arranged है। कौन कौन सा कंपोनेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाता है। लेट अस देखो कोई मेम्ब्रेन है तो इस मेम्ब्रेन की कुछ ना कुछ थिकनेस होगी। लेट अस दिस इज इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन हुआ, इसको हमने काट दिया, मान लो यहां से यहां तो इससे ऊपर में क्या है, बाहर में क्या हो गया, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया।
ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, ये क्या हो गया बेटा, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया। ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया, ठीक है। और ये क्या है, मैट्रिक्स है, ये अंदर तो मैट्रिक्स है ना बेटा, ये मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब इंटर मेम्ब्रेन के बाद यहां पर मैट्रिक्स होगा। दिस इज द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हो गया, ये आपको इनर मेम्ब्रेन हो गया एंड दिस इज योर आउटर मेम्ब्रेन, और ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। एंड इस मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। दिस ETS is made up of 5 complexes. इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 5 कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ETS कितना है बेटा, ETS में 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं। ETS में कितने कॉम्प्लेक्सेस हैं, 5। पहला जो कॉम्प्लेक्स है उसको हम कहते हैं NADH, डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे बेटा, NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। It has FMN and FES। इसमें क्या क्या है, FMN and FES। First complex is NADH dehydrogenase complex, right? ये NADH dehydrogenase complex जो है वह इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है एंड दिस complex is the largest complex। ये लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स क्या क्या है इसमें, FMN है एंड FES है। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स इज क्लियर। द सेकंड कॉम्प्लेक्स इज known as सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। सेकेंड जो कॉम्प्लेक्स है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड कॉम्प्लेक्स जो है दैट इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, SDH, ठीक है। सेकेंड कॉम्प्लेक्स इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये SDH। अब देखो SDH जो है, सो SDH इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द मैट्रिक्स साइड ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन। यानी SDH जो है इनर मेम्ब्रेन में है लेकिन मैट्रिक्स की तरफ है, अंदर की तरफ है। ये स्मॉलेस्ट कॉम्प्लेक्स है, SDH इज द स्मॉलेस्ट कॉम्प्लेक्स। दूसरी बात, ये जो SDH है इसका कंपोनेंट है FAD एंड FES, FAD and FES, and this complex, this is the complex which takes part in Krebs cycle also। ध्यान में रखना है यही एक कॉम्प्लेक्स है जो क्रेब्स साइकिल में भी भाग लिया था। आपने देखा था वहां पर सक्सिनाइल कोएंजाइम में से सक्सिनिक एसिड बना था, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बना था। तो आपने देखा था कि जो SDH है यानी ये जो एंजाइम है वो मैट्रिक्स की तरफ है मेम्ब्रेन में, इट इज मेम्ब्रेन बॉन्ड। अगर जो एंजाइम्स हैं क्रेब्स साइकिल के वो मैट्रिक्स में है और ये मेम्ब्रेन बॉन्ड है। तो सेकंड कॉम्प्लेक्स इज सक्सिनेट
hydrogenase complex that is present in the inner membrane towards the matrix side. The third complex is cytochrome BC1 complex. थर्ड जो कंपोनेंट है that is cytochrome BC1 complex. So this is complex 1, this is complex 2, this is complex 3. The fourth complex is cytochrome C oxidase complex. Cytochrome C oxidase complex. This is the fourth complex. This is the fourth complex, cytochrome C oxidase complex. Or you can say cytochrome A3 complex. Right? अब क्योंकि ये जो है, ये जो फोर्थ कॉम्प्लेक्स है, उससे एक मोबाइल कैरियर अटैच होता है टुवर्ड्स द आउटर मेम्ब्रेन स्पेस, दैट इज कॉल्ड साइटोक्रोम सी. साइटोक्रोम सी. और एक मोबाइल कैरियर that is ubiquinone is present here between 1 and 3, just at the place of complex 2. So quinone and cytochrome C, these are the mobile carriers. तो आपने देखा complex 1, complex 2, complex 3, complex 4, and there is one more complex that is called complex 5. 1 to 4, complex 1 to 4 are involved in transport of electrons. However, complex 5 is involved in transport of protons. समझ में आ रहा है ना? Complex 1, 2, 3, 4 are involved in transport of electrons, and complex 5 is involved in the transport of protons. तो complex 5 में क्या होता है वो भी देखिए. ये complex 5 जो है, ये complex 5 का कुछ पार्ट तो मेम्ब्रेन के अंदर होता है और कुछ पार्ट मेम्ब्रेन के बाहर होता है. This is complex 5. This is complex 5. तो इसके दो पार्ट्स होते हैं. One part is embedded in the membrane, that is called F1 part, F0 part, F0 part, and जो पार्ट प्रोट्रूडेड होता है, बाहर निकलता है, निकला हुआ होता है, उसको कहते हैं F1 पार्ट. जिसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, F0 या F0 F1 कॉम्प्लेक्स. तो फिफ्थ कॉम्प्लेक्स कौन सा हो गया? दैट इज F0 F1 complex, and this complex is involved in the transport of electron and is responsible for formation of ATP, where oxygen is used terminally to form water. So these are the 5 complexes which are situated in the inner mitochondrial membrane. ये तो आप समझ गए. So set of these complexes which are present in the inner membrane of mitochondria, through which electrons are
transport system. And finally, ATP is produced when oxygen is used. So that is oxidative phosphorylation. चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स से कैसे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है और कैसे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, 2 मिनट आप लोगों के देंगे कि कोई कुछ क्वेश्चन इस